Right. Hello and welcome. Sorry, guys. थोड़ा सा uh, थोड़ा सा tiredness feel हो रहा है after 5 days, I guess, of commentary. But having said that, yeah, it was a very, very good test match. It was lovely. Everything about that test match जैसा होना चाहिए, even though we can discuss about the test match थोड़ा और डिटेल में अगले टेस्ट मैच के बारे में भी we can discuss it in detail. But yeah, I thought was wonderful. पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक it just kept moving. Hopefully the uh, uh, थोड़ा सा पिच अगर थोड़ा सा ज्यादा कैरी होता तो शायद और बेहतर होता. We would have seen a little more action. Obviously, बीच में uh, there were sessions जो थोड़ा सा slow हो गया because pitch जो है, I mean the pace of the pitch kind of dictates um, द पेस ऑफ अ गेम. तो अगर पिच स्लो होता है तो फिर गेम का भी पेस जो है वो काफी स्लो हो जाता है. In that case, I thought that was the only thing missing out of this test match. Is that? But again, welcome back to Deep Point Live. As I've mentioned, we'll keep doing it. Hopefully, every week we'll keep doing some live work. uh, because I think that makes more sense. So I can interact आप लोगों के साथ directly, आप लोगों के सवाल ले सकता हूँ. So thank you for joining in. जितने लोग अभी आए हैं और जो आ रहे हैं, please ask me whatever you want. Hopefully, I'll be able to answer all your questions. And that's that. Okay. Tojo kaya hai. Good afternoon, sir. Will India go with Case Bharat in the next match? Interesting. There is, I mean, obviously डिपेंड करेगा कि रिद्धिमान साहा किस हालत में इस वक्त. अगर वो पूरी तरीके से फिट है 100%, तो मे बी मे बी यू माइट सी रिद्धिमान साहा, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क रहा है विद रिद्धि इज वेदर ही कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट. और मुझे लगा जो सेकंड इनिंग्स में जो 61 नॉट आउट उन्होंने किया है, दैट वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल नॉक. सो ऑब्वियसली he's done well with the bat. Keeping तो खैर हम जानते हैं how good he is. So a lot will depend on his fitness. He's fit or not. उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और एक चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, शायद उसके बारे में आगे बात करते हैं. आदि कुल श्रेष्ठा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं राधा सर, who will replace Virat Kohli in the second test match? I love your commentary. Thank you, Adi. कौन रिप्लेस करेगा? That's a very good question. So ideally speaking, it would be, अगर सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखें, it will be difficult to rest श्रेयस. 100 पहले इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 50, और दोनों बहुत ही क्रूशियल टाइम पर हैं. पहले इनिंग्स में भी मेरे ख्याल से 140 पे 4 या 5 हो गए थे. उसके बाद वो 100 आया है. सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली 51 फॉर 5 था. खैर 41 फॉर 3 था जब वो बैटिंग करने आए थे. लेकिन वहां से दोनों इनिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड I find it really difficult to kind of not play him. तो choices मेन अगर देखा जाए तो मेन choices एक ही है कि अगर अजिंक्य is rested. I know he was captain this game, but I guess straight swap हो जाएगा. 5 नंबर की जगह 5 नंबर and Virat comes in at 4. वो एक straight swap है. और एक थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड है, and it is connected with Tojo's question थोड़ा सा, कि क्या अगर रिद्धिमान साहब फिट नहीं है तो can KS Bharat open and keep wickets? Then you can play uh, Pujara, Virat, Ajinkya and Shreyas, all 4 of them. One of them will be dropped. Obviously, one of the openers will be dropped. तो वो एक और ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है. बट आई थिंक दैट अगेन इज एन ऑप्शन आदि मेरे हिसाब से. राइट. रोहित पूछ रहे हैं सर, शुड बी नाउ प्रिपेयर बैकअप फॉर पूजा एंड रहाने नाउ? आई थिंक बैकअप तो है. आई थिंक सोचना तो शायद पिछले 6-8 महीने से हो ही गया था. I hope the selectors are smart enough, and people running the show, they are I mean I'm sure they must be looking at क्या options हो सकते हैं. और सही मानों में आई थिंक द ऑप्शंस आर काइंड ऑफ देयर. ऐसी बात नहीं है. अगर आप देखें तो
इस मैच में भी अगर केएल राहुल फिट होते तो शायद शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर पे बैट करते, तो शुभमन गिल, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर, साथ में हनुमा विहारी, तो एटलीस्ट आपके पास ऐसे दो तीन तो हैं जो स्ट्रेट अवे वहां पे आप देख सकते हैं जिनको आप। साथ में नंबर 3 बिकम्स अ लिटिल मोर क्रिटिकल, बिकॉज ऐसा कोई चाहिए जो फास्ट बॉलिंग को भी उतना ही अच्छा खेले जितना स्पिन को खेले। So maybe might look at some other options as well. So yeah, yes, Rohit, I think बैकअप देखना तो मेरे ख्याल से शुरू पहले ही हो गया था. Yes, G Paul, how are you? In hindsight, did India declare a late or Sahan Aksa could have been more aggressive? इसके दो चीजें हैं. एक, आई थॉट कि वो 4 ओवर से ज्यादा आप कर सकते थे, लेकिन कितना ज्यादा करते आप 3-4 ओवर ज्यादा करते, 8 ओवर करते, वो एक है. दैट वाज वन डेफिनेट थिंग, कि आप 20 मिनट की जगह 40 मिनट अब अगर आप देते हैं. और इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में कोई भी बल्लेबाज खेलना नहीं चाहता, क्योंकि वो आखिरी के आधा पौना घंटा यू डोंट हैव मच टू गेन आउट ऑफ इट. तो वो एक था. और दूसरा, मुझे आई थिंक मैं कमेंट्री में भी कह रहा था कि पहले सेशन से अगर हम देखिए, ओवर रेट सही था, 14.5-15 ओवर पर आवर, विच इज एब्सोल्युटली, विच इज गुड. लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर आपके पास ऐसे बॉलर हैं जो 2-2.5 मिनट में ओवर डाल देते हैं, अक्सर हैं, ऑब्वियसली जडेजा है, तो क्यों ना पहले सेशन से आप थोड़े से जो है जल्दी, क्योंकि 91 ओवर्स मिनिमम करने थे दिन में. आ, आप 100 ओवर भी डाल सकते हैं, और आपके पास जब वो वैसे बॉलर्स हैं जो ज्यादा जल्दी जल्दी डाल सकते हैं और 91 की जगह आप 100 डाल सकते हैं, तो मुझे लगा पहले सेशन से ही थोड़ा सा वो दिमाग में रखना था. और उससे क्या होता है कि आप अगर जल्दी आप ओवर डालते तो जो सेकंड न्यू बॉल है वो भी आपके पास जल्दी आता. मेरे ख्याल से सेकंड न्यू बॉल बिकेम ओनली अवेलेबल एट 3:15, 3:20. वही अगर आप थोड़ी देर जल्दी करते तो वही नया बॉल जो है वो 20 मिनट, 25 मिनट पहले आपके पास अवेलेबल होता. आप 4-5 ओवर ज्यादा नए बॉल के साथ डाल सकते हैं, सिर्फ ज्यादा ओवर नहीं डाल सकते थे नए बॉल के साथ. I think that makes a huge difference. So I think, yeah, couple of things. But having said that, I think they batted very well. लेथम, विलियमसन, फिर अजाज और रचिन. बॉलिंग भी मैं ये कहूंगा कि अच्छी हुई है. बॉलिंग, आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद बॉलिंग एज सच. थोड़ा सा पिच धीमा था तो थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है बॉलर्स का. बट या, दैट्स दैट. राइट, व्हाट डू वी हैव? अवेज जमान पूछ रहे हैं, इंडिया स्पेसर्स वर यूजलेस कीपिंग इन माइंड द न्यूजीलैंड सीमर्स who did a wonderful job for the team. Why is India lacking sheer pace bowlers who can consistently hit 145 plus kilometers? Okay. Okay, इसमें अवेज क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स हैं. अगर आप टीम साउदी देखें, तो वो अलग बॉल डालते हैं, वो थोड़ा धीरे डालते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से ईशांत और उमेश. और साथ में वो स्विंग बॉलर है. ईशांत और उमेश दोनों वैसा स्विंग बॉलर नहीं है. दैट इज वन. सेकेंडली, जेमिसन भी अगर आप देखें तो स्विंग उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अच्छे लेंथ सेट किए. एंड आई अग्री, आई completely agree, and I think everyone will agree कि obviously Southee and Jamieson bowled better than ईशांत and उमेश. इसमें कोई दो राय नहीं है. हालांकि उमेश का कल का एक स्पेल था, 6-7 ओवर का रिवर्स स्विंग हो रहा था. आई थॉट विकेट नहीं मिला, लेकिन आई थॉट ही बोल्ड रियली वेल. बट हाँ, थोड़ा सा अलग किस्म के बॉलर हैं साउदी. जेमिसन के पास भी वो काबिलियत है कि स्विंग करा पाए. थोड़ा सा आई वाज आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा दोनों टीम के सीमा से. could be the length that, एक तो इंडियन बॉलर्स वर बॉलिंग, और ये ऐसा पिच है जहाँ पे क्योंकि सर्दी है यहाँ पे, तो जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्किड करके जाता है. तो वहां पे जो हिट द डेक बॉलर होता है, उसमें क्या होता है कि वो पिच पकड़ लेता है ज्यादा बॉल को, तो ऑफ द पिच पेस कम निकलता है. वहीं पे जो इंग्लिश टाइप के बॉलर्स हैं, जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं, उनको पता है कि ऐसे पिचेस पे कैसे बॉल डालते हैं जहाँ पे बॉल पड़ के स्किड कर जाता है. वो हिट द टेक बॉलर नहीं है, वो स्किम करता है बॉल पड़ के. तो अगर आप देखेंगे कि हालांकि 130 132 ही आ रहा था स्पीड टिम साउदी का, लेकिन जो कैरी देख रहे थे हम, ब्लंडल
कैरी जो कीपर तक था वो बहुत अच्छा था, तो वो इसी के लिए था क्योंकि ये हिट द टेक बॉलर नहीं है, ये स्किड कराने वाले बॉलर हैं। ये जरूर आप पूछ सकते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे बॉलर नहीं है, बिल्कुल है। आई थिंक शामी एक ऐसे बॉलर हैं, बुमराह भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऐसे हैं। बट या आई थॉट न्यूजीलैंड bowlers were much better than Indian seamers, New Zealand seamers actually. राइट एंड अगेन आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, यहाँ पे थोड़ा है होटल में इंटरनेट इशू। ओके, दिस इज माय कजिन कौस्तव Hallar. Yeah, do you think the Indian middle order in all formats has been a bit of a problem for a long time now? I'd love to know why. Beyond Shreyas, do you see other strong middle order players in the pipeline? Kostov, yes, I do. Um, I've just mentioned दो तीन नाम, which includes obviously Shreyas. I think Shubman Gill, red ball cricket में is more suited to the middle order than open. Then obviously you have Hanuma Vihari. Uh, and और कौन है? You, uh, इसके अलावा you can also look at a few other options. For example, someone like one of the openers batting at three. Mayank spin अच्छा खेलते हैं. Mayank batting at three because as I mentioned a little while ago कि you need somebody at three जो seam और spin दोनों अच्छा खेलते हैं. Uh, so उस हिसाब से I think तीन number becomes a little more trickier than number five at this point in time. And yeah, you might look at someone like a Mayank or a Ruturaj, people who play both seam and spin well, have a decent record in red ball cricket, domestic. Yeah, I think I don't see there is an issue with India's middle order. I think it's just a matter of time. Once they get that opportunity, I think they will get hold of that opportunity. Right. Okay. Hey Austin, do you think India missed Virat, the test captain, and Pant, the keeper, for their aggressive captaincy and batting? If South Africa tour is cancelled, will India be without cricket till Feb's retention videos? Yes, Austin, retention videos. Jesus, man. Yeah, I'll tell you this, guys. I mean, it's got nothing to do with Austin's question. God, you leave at 7 in the morning, you come back by 5:36. थोड़ा सा gets a little tough. ऊपर से ठंड and I haven't keeping that well. I haven't been keeping that well actually. थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, but nothing to worry about as such. So I'm sorry about that retention video, Austin. Obviously, some of the teams have already announced their retention, some of them at least. Right, and going back to your question, Virat the test captain, Pant the keeper. Yes, I mean more than that, I think both of them as players. Virat the player, Pant the player. I think captaincy wise, again, I mean going back to that declaration, that happens. I don't think that was a blunder or whatever. They could have declared before, or it was fine. I don't think that was a mistake per se. Um, I think keeping wise, obviously you won't miss, but yeah, you have someone like Rishabh who open up the game. But having said that, Ridhiman did a fantastic job with the bat of Ake, scored that 61, and that partnership with Shreyas was very, very important. But having said that, you would definitely miss quality players like Virat and Rishabh if they're not playing. Yeah. Okay, who do we have next? That's acting up. It's a problem here. This internet here. Okay. Vinay Didic, पूछ रहे हैं Dadich, if I'm not wrong. What different do you see in Shreyas Iyer in Test cricket? I think his maturity. अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मैंने खेलते हुए देखा है श्रेयस को, एंड ही इज लाइक वेरी अग्रेसिव, especially against spin. खुल के खेलते हैं. That's the reason his strike rate in even in first class cricket over what 4,000, 4,500 runs is 82. वहीं पे अगर आप देखें तो the way he batted first innings में, the first 25 runs that he scored, I think first 25 runs he scored of 80 balls or something. Obviously उसके बाद again then comes the maturity part. Okay. As soon as Rachin came to bowl, who's your fifth spinner, I won't say part-time spinner, but not really a out and out main spinner of the team. जैसे ही वो आया, he scored I think 22 runs in 23 balls from him. So
दैट इज मैच्योरिटी, रियलाइजिंग कौन सा बॉलर कौन से सिचुएशन में आप रन निकाल सकते हैं. सो आई थॉट द होल मैच्योरिटी पार्ट. देखिए, गेम तो है, गेम नहीं होता तो किसी कोई 450, माफ कीजिएगा, 4,500 रन नहीं बनाता फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एट एन एवरेज ऑफ 50+. सो क्वालिटी है, वी नो दैट. बट आई थॉट द maturity and discipline was very very good. Sushant Chaudhary, hello sir, what will your changes be for next game? Can Siraj play in place of Ishant? Uh, अभी ग्राउंड पे देख तो रहा था कि वो बॉल डाल रहे थे, so there is a good chance that he's fit. As it is, he did not have an issue bowling. वो तो उनका मेरे ख्याल से नॉन bowling आर्म पे जो वो स्टिचेस लगे हुए हैं. Maybe that's the reason. I hope he's fine. Yeah, if that's the case, Siraj might come in. Along with that, obviously Virat comes in. So, and I think I've already mentioned if Virat comes in, क्या options हैं, I guess, क्या हो सकता है according to me. So yeah, that's what it is, Sushant. Advay, how will Mumbai bounce help us spinners more than? Oh, a lot, Advay. क्या होता है, सिर्फ बाउंस नहीं होता, बाउंस के साथ कैरी होता है. तो अभी हम जब देख रहे थे ना कि बैट पैड लग भी रहे थे लेकिन कैरी नहीं हो रहा था, तभी हमने बहुत टाइम देखा कि स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे ऐसे पिच के ऊपर लेकिन कोई सिली पॉइंट शॉर्ट लेग नहीं है. एंड दैट इज ओनली बिकॉज देयर इज नो कैरी. मतलब बैट पैड लग के कैरी भी तो होना चाहिए ना. स्लिप में हमने कितने सारे एजेस देखे जो कैरी नहीं किए. तो वही जो होगा अब, बिकॉज ऑफ द कैरी एंड बाउंस इन वानखड़े, यू विल सी दोज एजेस जो है वो कैरी कर रहे हैं, बैट पैड कैरी करेगा. तो वो आई थिंक दैट हेल्प्स द बॉलर्स मोर. और क्या होता है, अगर पेस होता है कि आपने बैट्समैन को आपने हवा में बीट कर दिया, सोच लीजिए, लेकिन ऑफ द पिच इतना धीरे आता है कि आपने गलती से बैकफुट चले गए आप, लेकिन आगे की बॉल को, लेकिन पिच इतना धीमे है कि आप मैनेज कर लेते हैं, आपके पास वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो आप बैट समहाउ मैनेज कर लेते हैं. तुमने देखा है काफी बैटर्स जो है मैनेज किया है उन्होंने, आगे की बॉल पीछे जाके फिर भी मैनेज कर लिया. वही जब पिच पे पेस होगा तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे. अगर आपने रीड गलत किया है हवा में, चाहे वो लाइन हो या लेंथ हो, वो टाइम कम है आपके पास कि आप मैनेज करें ऑफ द पिच. तो वो एक ये तो बहुत बड़े जो है डिफरेंस हो जाते हैं. पार्थ हाफ सर पूछ रहे हैं, हेलो सर, शुड मेन प्लेयर्स बी रेस्टेड ओनली इन व्हाइट बॉल सीरीज नॉट इन टेस्ट बिकॉज व्हाट डू यू थिंक? पार्थ, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर, या तो आपके पास ऐसे प्लेयर हो जो स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफिक हो, T20 ओडीआईज या टेस्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस शुड go to test match cricket. I don't think people should be resting from test match cricket. Having said that, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं आपको वो देखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अच्छा अगला सीरीज के अगले 6 महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीरीज है. मेरे ख्याल से काफी प्लानिंग की जरूरत है. छह क्या, पूरे एक साल अगर उठा ले तो अभी से शायद प्लानिंग शुरू हो गया होगा. आई बी वेरी सरप्राइज्ड इफ द इंडियन टीम इज नॉट प्लानिंग कि अगले एक साल में आप क्या क्या खेल रहे हैं, एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू इट कि अच्छा कौन से आपके मार्क की सीरीज हैं, बड़े सीरीज हैं, जहां पे आपको आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी जरूरत है. कोई भी फॉर्मेट हो, वर्ल्ड कप है तो उसके लिए भी जरूरी है, तो उसके पहले आप जरूर चाहेंगे कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले T20 का, जैसे वर्ल्ड कप के पहले. तो वो आई थिंक काफी चीजें हैं जिसके ऊपर आई थिंक यू हैव टू लुक इनटू बिफोर क्रिएटिंग अ शेड्यूल कि कौन कौन सा मैच खेलेगा, कौन कौन सी सीरीज में रेस्ट करेगा. लेकिन अगर मोटा मोटा, अगर अगर आप मुझसे पूछे, आई थिंक जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, अ, वो बेशक ओडीआई T20 से ब्रेक ले ले, लेकिन नॉट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, पार्ट इज व्हाट आई बिलीव. साफिन ने पूछा है, सर व्हाट इज द रीजन मेन अक्षर पटेल सक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट? दो चीजें जो जो इज वेरी एविडेंट इज हिज स्मार्टनेस. स्मार्टनेस मतलब किस पेस में डालना है. अगर आप इस पूरे टेस्ट मैच में देखें तो ही इज एक्चुअली बोल्ड अ लिटिल स्लोअर
देन इंग्लैंड के अगेंस्ट जो बॉलिंग किया अक्सर ने, आई थॉट ही वाज लॉट स्लोअर. ऑब्वियसली उनका जो स्किल सेट है, सेकेंडली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, लेकिन वो एकदम टाइट रखते हैं, विकेट टू विकेट डालते हैं. अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो ज्यादातर बॉल्स जो है वो विकेट को जाके लग रही थी या वो ऑफ स्टंप के आसपास ही थी. तो वो एक अलग किस्म का चैलेंज है बैटर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये बिग बॉल जो है ये स्टंप पे जाके हिट कर रही है, तो आप ज्यादा चांस नहीं ले सकते. राइट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और क्योंकि बॉल ज्यादा हिट कर रही है स्टंप्स पे, तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, बोल्ड के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, लेग बिफोर के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, बैट पैड एजेस वगैरह तो हैं, वो तो हो गए. उसके साथ आपके जो चांसेस ऑफ पिकिंग विकेट्स आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज यू हिटिंग द स्टंप्स. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो अक्सर डाल रहे हैं, और जो पेस से डाल रहे हैं, आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट. उनको भी पता है कि उनके दायरे क्या हैं, उनको भी पता है कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो वो ज्यादा अपने वीकनेसेस के बारे में सोचते नहीं है. ही वांट्स टू मैग्नीफाई जो उनका स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर ही उनका गेम बेस करते हैं वो, तो दैट्स द रीजन ही इज सक्सेसफुल. ये एक चीज तो ये भी आप दिमाग में रखें कि ऑब्वियसली जिन पिचेस पे खेला दैट दोज आर आल्सो हेल्पफुल स्पिन पिचेस. सो देयर बी गेम्स वेयर ही माइट नॉट पिक विकेट्स. सो ऐसा नहीं है कि हर एक मैच में उतरते ही, जैसे अभी उनका हो गया 4 मैच में 5 विकेट हॉल. So I guess sooner or later there'll be test matches जहाँ पे वो might go wicketless, but that does not mean he becomes a bad bowler. Yeah, कविताओं की लाइब्रेरी क्या बात है. If CR7 scores goal and doesn't win Champions League or any title, will he be removed from clubs? So why the question of Virat's ICC trophy? At the rate Deep Gupta, good one. The question is not really that Kavitaon ki library. Next time around, do let me know your real name. Um, uh, so the thing is, I understand. लेकिन अगर आप देखें तो CR7 या Messi, they'll also win you games. They will you tournaments. मैं ये नहीं कह रहा कि विराट will not, but I don't think it's the right analogy because one, you cannot choose the country that you want to play for, right? But you can choose the club. So obviously CR7 when he moved to Manchester United before this season, he had a few options. I'm sure before Messi moved to PSG, he had options, but playing for your country, you don't have an option. So Portugal के लिए खेलना is not an option. या नहीं खेलना for that matter. Same with Messi and Argentina. So I think Champions League or ICC are are not the right analogy, but I do understand आपका सवाल जो है. And see the other thing is, अगर आप देखें कोई भी कप्तान पिछले, जितना मुझे याद है, say let's say from 90 to 93 when I've really understood cricket and followed cricket, there won't be too many captains. हर एक कैप्टन का एक लाइफ साइकिल होता है इन जनरल, which is 5 से 6 साल होता है, and then you move on, then you need to change and look at someone new. अब चाहे आप सौरव गांगुली देख लें, उसके पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन देख लें, MS धोनी देख लें. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है कैप्टनसी का, बिकॉज अगर आपने 6 साल में आपने दे दिया जितना दे सकते थे, जनरली स्पीकिंग, and it becomes very difficult to reinvent and give something new. So from time to time, I think you need to look at other options after a while. इतने साल होने के बाद, he's done a fantastic job. Again, I just because he has not won an ICC trophy, that does not mean he's not a good captain. I think his record in all formats will tell you he's a good captain. He's better than a lot of international captains. So I agree while you say that, but I also think कि जब 5 6 साल 7 साल हो जाते हैं, I think it's time to move on and get somebody in, get some new ideas in, क्योंकि थोड़ा stale भी होता रहता है. I think how things are done. That's my take. Sakit Patel. So what will be the kind of pitch you expect in Wankhede? Another ranked turner? Will it support seam and swing just like previous match? I think it will. Wankhede, because of the carry, generally जो होता है वानखेड़े में,
everyone benefits. फास्ट बॉलर को भी कैरी पसंद है, बैटर्स को कैरी पसंद है, क्योंकि अब सॉरी अब यू गेट वैल्यू फॉर योर शॉट्स. स्पिनर तो है. So how I think is obviously it will, and I will not be surprised if the pitch turns. So yeah, the pitch will turn, but it will turn thoda sa quickly, thoda sa bounce ke साथ. But because of that bounce and pace, I think it should benefit everyone, but spinners obviously ज़्यादा. Sorry guys. Hmm. Who do we have next? Oh God, I hope it's not the internet which is messing up. Okay, no, it's not. Thank God. Okay, it's Parth again, sir. What do you think of umpiring? Oh, should ICC resume to field neutral umpires again in international cricket? Players can live in bubbles, so why can't umpires do live in bio bubbles? Okay. Mm, well, yes, yes. That's a good thought. If players or us, we are living in a bio bubble, then why not umpires? I mean, anyways, the domestic umpires are also, as in, up umpires, how do I put it, non-neutral umpires are also living in the bubble. Um, but yeah, I mean, see, listen, I understand what you're saying, Parth, again, but the idea is तभी तो दो की जगह अब तीन हो गए हैं reviews, and I think yes, I don't think it was a great game for the on-field umpires or even third umpire. ये वाला match. In general, I think someone like Nitin Menon is a good umpire. Anil Chaudhary is a good umpire. So Anand Padmanabhan is a good umpire. So you have good umpires, ऐसी बात नहीं है. And I think that's the reason दो से तीन हो गया review. So even if they do make a mistake, it doesn't have to be costly. Rohit again, sir, should Indian cricket implements rotation policy like ECB? Like ECB नहीं बोलूंगा. I think rotation is the wrong word to use. I don't know what is the right word, to be honest, Rohit. But not like ECB यार. ECB तो मोइन को एक बार आपने सीरीज खेलना शुरू कर, how can send somebody in the middle of the series based on बीच में internet, right? Sorry, based on me. I think it's fine now. Sorry, guys. Yeah. So yeah, I would like to see some form of workload management and people being rested, players being rested. Like in not the lines of ECB. I think has to be a little more firm planning behind it, not random series के बीच में players वापस जा रहे हैं, players वापस आ रहे हैं. Yeah. Advay, will Prithvi get any chance in tests as a byproduct of his amazing white ball form? Okay, he got some runs in. He's gone to South Africa, India A के लिए. So Prithvi, yes, but I think there are options. अगर आप देखें तो केएल रोहित तो हैं ही, साथ में मयंक है, uh, साथ में प्रियांक पांचाल, अभिमन्यु ईश्वरन. आई नो दे डोंट प्ले आईपीएल, लेकिन अगर आप उठा के देख लें अभी साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया जो खेल रही है, इंडिया ए, प्रियांक ने 95 96 कुछ किया है, अभिमन्यु ने 100 बनाया है. सो एंड इट्स बीइंग प्लेड इन साउथ अफ्रीका. सो हाँ, ऑप्शंस हैं. पृथ्वी, whether he will get into red ball cricket, he can, but does he want to? Does he want to make those changes? Subtle changes. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि you stop being yourself, but is he ready to make those subtle changes? जैसे हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, the maturity, the discipline that he's shown is this match में. Is Prithvi ready to make those adjustments? Is my question.
Right. Okay. Adi. Sir, is India missing Kela and Rohit Sharma in this series? Yes, definitely. Yes. I mean, especially after that series against England, hmm, it is it is quite. I mean, they batted like champions. वहाँ पे. England में मैं in fact मैं वहीं पे था. Even English guys were saying they haven't seen openers, English or overseas openers, batting as well as that in those conditions, like Rohit and KL. So yeah, I mean, when they don't play, you will miss him. But that also means opportunity because if you also think Mayank, he didn't do no wrong. Obviously, वो concussion अगर नहीं होता पहले टेस्ट के पहले in England, then Mayank would have opened. KL wouldn't have. KL would have batted in the middle order. So yeah, it's funny, but I think yeah. Uh, mhm. Right, guys, मैं थोड़ा सा I'm under the weather. I think this will be the last question, and then थोड़ा सा मैं दवाई वाई ले लेता हूँ. Give me, yeah, I'm sorry about this, but yeah. Anyways, I'll take this question from Parth. So, what do you think that some Indian batters are not that good against paces in terms of defense? Uh, mm, no, everyone has their own technique parts. द टेक्निक किसी का थोड़ा ज्यादा सर्टन कंडीशंस पे सूट करता है किसी का थोड़ा कम करता है एंड इट बॉइल्स डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट कॉन्फिडेंस लेवल और कहीं ना कहीं दैट कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त इन दैट इंडियन मिडिल ऑर्डर स्पेशली इज नॉट देयर इट्स द सेम पीपल जो एक साल पहले 2 साल पहले तक वो चैंपियंस यू नो एंड सेम गाय अजिंक्य who scored that 100 in Australia. Pujara looked brilliant uh, in England. So it is the same players. So रातों रात तो change नहीं हो सकते लेकिन confidence level जो है that is I think is something which is very important for everyone, not just cricketers, all of us. And I think that's where at this point in time where Indian middle order is lacking a little bit of that confidence. वापस कैसे आएगा? It's difficult. I think it's more internal. Internally, you have to be confident and get few big scores, and then not automatically on the back of a few big scores, you naturally become confident. But yeah, I mean, it is more of an internal thing, right? Well, Path, I hope I've been able to answer your question. And again, thank you everyone for being here and being part of the last half an hour plus. I'm extremely sorry. Generally, मैं 1 घंटा करता हूँ, but one obviously is a travel day. But most importantly, I'm just feeling a little under the weather. So I'm extremely sorry, and I promise you I'll do that sometime soon again. The live thing, I'll try and take as many questions. But having said that, thank you very much for joining me here, and do keep supporting the channel. Thank you.